हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इजी लॉ। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट करने लगे हैं। आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया हूँ। कल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक फर्स्ट पार्ट करवाया था। आज पार्ट नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जेएलओ राजस्थान बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपके लिए कुछ हटके क्वेश्चंस बनाए जाएं, क्योंकि हमने हरियाणा एडीए का जो पैटर्न देखा उसके अंदर असर्शंस, रीजंस, ऑप्शंस, चूज, हमें जैसे ऑप्शंस दिए गए थे वहाँ पे ऊपर से कोई 2 सही 3 सही ऐसे जो ऑप्शंस दिए गए थे, तो उसको भी ध्यान में रख के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो अब जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये लोग अपने एग्जाम पैटर्न को, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे हम शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो वेलकम टू इजी लॉ, लेट्स बिगिन। सो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 of the Constitution of India enables amendment of basic structure of the Constitution by two-third majority of both houses of the Parliament, two-third majority of both houses of the Parliament, and ratification by the legislature of two-third of the state, simple majority of both houses of the Parliament, and none of the above। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और अपने कमेंट्स जरूर देते रहिए। ऑप्शंस को कमेंट्स में मेंशन करते जाइए। इससे क्या होगा, मेरे को भी सपोर्ट मिलेगी, मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करता लाऊंगा। तो आप थोड़ा प्यार दिखाएंगे तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। सो कीप सपोर्टिंग। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आप सबने दिया होगा, तो इसका ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी appearing in part 4 article 36 to 51 of the constitution of India have been borrowed from the constitution of Ireland, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, नन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसमें तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो आप सबको आता होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। Which of the following is a constitutional right but not a fundamental right? Right to practice any profession or occupation, right to hold property, right to move freely throughout the territory of India, right to constitutional remedies for enforcement of fundamental rights. Which of the following is a constitutional right but not a fundamental right? आंसर बताइए। ये रिपील हो चुका है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं। Next question is question number 4. Right to education guaranteeing free and compulsory education to all children of age from 6 to 14 years has been inserted in Part 3 of the Constitution of India by Constitution 84th Amendment 2001, Constitution 85th Amendment 2002, Constitution 86th Amendment 2002, Constitution 87th Amendment 2003। आंसर दीजिए इसका। आर्टिकल 21A, 51A, थोड़ा सा लिंकिंग दी है मैंने आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ठीक नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In a petition under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner may inter alia seek declaration as to invalidity of a statute, a writ of prohibition, a writ of habeas corpus, D, all of the above। आंसर दीजिए इसका। इन अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पिटिशनर में सीक, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली लेज डाउन राइट ऑफ एवरी पर्सन टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस इन आर्टिकल 22, 21, आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 40। लिंक विद सीआरपीसी, आपको याद आ जाएगा इसका आंसर। सो आपने आंसर दिया होगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Name the case that was overruled by Keswananda Bharati, Sajjan Singh versus State of Rajasthan, IC Golaknath and others versus State of Punjab and another, Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, Shri Shankari Prasad Singh Deo versus Union of India। सेवेंथ का आंसर बताइए। केशवानंदा भारती को कौन से केस के अंदर ओवररूल किया गया था?
Option is option number B, IC Golaknath. And this case is very important and maximum repeatedly in many exams in which constitution is a subject in pre. So focus on the case laws also. The landmark decision of the Supreme Court of India in Indira Sahane versus Union of India dealt with the issue of reservation in educational institutions, equal pay for equal work, reservation of OBCs in government employment, right of working women. आपने आंसर दिया होगा इसका ऑप्शन नंबर सी. Question number 9. Article 24 of the Constitution of India deals with right against self-incrimination, freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institution, prohibition of traffic in human being and forced labor, prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, etc. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. 9th is D. Prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, etc. Who was the judge of the Supreme Court who dissented in ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla? Justice H.R. Khanna, Y.V. Chandrachud, M. Hamidullah Beg, Chief Justice A.N. Ray. So it's a very famous case and famous justice. Now justice, तो इसका correct option होगा 10th का A. Justice H.R. Khanna. Which article of the Constitution of India contains special provisions for the state of Sikkim? Article 371E, F, G, H. Hope you know all answers का जानते होंगे. So correct option is option number 371. Next question is, administration of justice is part of which list in the 7th schedule of the Constitution of India? List 1 union list, list 2 state list, list 3 concurrent list, and none of the above. एलिमिनेशन मेथड भी आप लगाइए तब भी आंसर निकल जाता है हमारा क्वेश्चन का. एक सिंपल ट्रिक होती है कि उसको एलिमिनेट कर दीजिए जिसको आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उनमें से फिर जो जो आपके पास बचते चलेंगे तो उसमें से आपको इजी हो जाता है कि हाँ दिस इज. ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हम प्री सॉल्व करने के लिए निकालते हैं. तो आपने इसका आंसर दिया होगा. इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन मफ्तलाल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया dealt with the issue of benefit in excise law for post-manufacturing expenses in textile industry, constitutional validity of the Industries Development and Regulation Act 1951, equal treatment in the matter of grant of license for manufacture of textiles, unjust enrichment in the context of refund of excise and custom duty. It's a very good question. होप आप सबने इसका आंसर दिया होगा, करेक्ट दिया होगा. ऑप्शन नंबर डी. Next question. What was the subject matter of Supreme Court decision in S.R. Bommai versus Union of India? Power of the President to impose President's rules in a state in terms of Article 356 of the Constitution, duty of the Union to protect states against external aggression, validity of the proclamation of emergency under Article 352 of the Constitution of India, effect of proclamation of emergency in terms of Article 353 of the Constitution. आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा. इट्स ऑप्शन नंबर ए. Powers of the president to impose president's rule in a state in terms of Article 356 of the Constitution. Next चलते हैं. Which of the following statement is correct in India? In the context of Article 20 of the Constitution of India, two or more persons cannot be jointly prosecuted and punished for the same offence more than once. No one can be prosecuted and punished for the same offence more than once. No one can be prosecuted and punished for two offences committed at two different places. No one can be prosecuted and punished for two offences committed by him in one occurrence. It's a good question and easy one. So इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. 15th का B. No one can be prosecuted and punished for the same offence more than once. 16th. In the event of inconsistency between a law enacted by the Parliament and another made by the state legislature, the law made by the state legislature shall prevail. Made by the Parliament if passed after the law made by the legislature of such state shall prevail. Made by the Parliament if passed before the law made by the legislature of such state shall prevail. Made by the Parliament whether passed before or after the law made by the legislature of such state shall prevail. So the correct option is
Option number D, made by the parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such state shall prevail. It's a very good question which is coming as 17. Assertion. Rule-making power of the Supreme Court of India is not subject to any law made by the Parliament of India. Reason. इसका rationale क्या है कि only an impartial and independent judiciary can protect the rights of the individual without fear or favor. 17th का आंसर दीजिए. So इसका correct option is option number B. R is true, but A is not. Rule-making power of the Supreme Court of India is not subject to any law made by the Parliament of India. So next question is also assertion and reason. Entries in the three legislative lists appearing in the Constitution of India are not always set out with scientific precision. Reason. The entries are not powers but are only the fields of legislation. Neither A, R is nor R is true. Both A and R individually true, but R is not correct explanation of A. A is not true, but R is. Both A and R true, and R is correct explanation of A. So 18th का क्वेश्चन आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी. Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से पढ़िएगा. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़ते चलिए. The Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between the Government of India and one or more states. The Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between the Government of India and any state or states on one side and one or more other sides on the other states on the other. The Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between the Government of India and any corporation or individual on one side and one or more states on the other. The Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between two or more states. Which of the following statements are correct and which are not? आप बताइए इसमें से पढ़ के. मैं टाइम दे देता हूं आपको. So आप सबने इसका आंसर दिया होगा. Its correct option is A. 1, 2 and 4 are correct and 3 is not. I will read for you. First is the Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between the Government of India and one or more states. Second is correct. The Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between the Government of India and any states or states on one side and one or more other states on the other. Third is wrong. Then fourth, the Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between two or more. Why 3 is wrong? The Supreme Court has original jurisdiction in any dispute between the Government of India and any corporation. और corporation वहाँ पे हमारे पास 4 चीजें दी हैं, आप उसको पढ़िएगा. Last question but not least, examine the following statement. The High Court is empowered to punish for its contempt. The High Court is empowered to tender advice on any legal question referred to it by the governor of the state. The High Court is empowered to tender advice on any legal question concerning the state for which it has been constituted, referred to it by the President of India. The High Court is empowered to issue certain writs for enforcement of fundamental rights and for other purposes. Which of the above statements you agree with? चलिए आंसर दीजिए सर. गुड क्वेश्चंस. This question will help you to enhance your pre-reading skills and फटाफट से आपको माइंड थोड़ा सा एडेप्टिव हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए. So its correct option is 20th is C. First and fourth are correct, but second and third are incorrect. So that's all for today. Thank you so much. आप इजी लॉ के ऊपर आए और आप बस ऐसे ही मेहनत करते जाइए. ये मेहनत ही रंग लाती है और सपोर्ट करते रहिए मेरे को. मैं अच्छे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा. आप सबको जो रिक्वायरमेंट, अगर कुछ कोई आपको चीज़ को पढ़ना हो जो ना समझ आ रही हो, तो मैं वो भी आपके लिए फटाफट से अवेलेबल करने की कोशिश करूँगा. सो थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग इजी लॉ.